Hello everyone. Now we are going to discuss a new topic named acid, which is a part of acid, base and salts in 10th chemistry. Acid in general, what is acid? Acids are those substances which taste sour when they are tasted by tongue. एसिड वो पदार्थ है जिनका जो स्वाद में खट्टे होते हैं, लाइक सिट्रिक फ्रूट्स. You can write those substance with taste are known as acid. Like if you take example of acid, citric acid present in fruits like lemon, orange, green mangoes, etc. ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो एसिड्स कहलाते हैं, जैसे नींबू, संतरा, हरे आम. But this is in general. But when we are talking about in technical words in chemistry, those substances which produce H plus ion or H2 gas, those substances which produce hydrogen ion or which removes hydrogen ion when they reacted with water or aqueous solution are known as acids. Acids are those substances when dissolved in water they produces hydrogen ion or hydrogen gas. In general, this is those substances which produce hydrogen ion or hydrogen gas is known as acid. There are different type of acids depending on from where we are getting that acid. Like for example, if it is a natural process, there are two types of acid present in the atmosphere. Like one which we can taste, and others are which are very harmful and dangerous to get tasted. Like acids like H2SO4, HCl, HNO3. Here H2SO4 is sulfuric acid. HCl is hydrochloric acid. HNO3 is nitric acid, etc. These acids can't be tasted and they won't produce sour taste, but they produce hydrogen ion or hydrogen gas. Hydrogen ion when they dissolve in water. So there is a little bit confusion why these acids are not able to be tasted, or they won't be sour in taste because we won't take risk to taste these acids, and the other acids are which are sour in taste and having bitter smell and soft taste. There is a difference, and the difference is how these acids are produced. Now if I talk about types of acids in general, this is your acid, and there are two types of acid. One is called organic acid and another is called inorganic acid. Organic acids are those in which the compound is of carbon, hydrogen and oxygen is formed. Organic acid वो एसिड होते हैं जिसके अंदर जो कंपाउंड होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से या नेचुरली मेड. These are forms from plants and animals. कहाँ से मिलते हैं ये? ऑर्गेनिक एसिड दो प्रकार के होते हैं. पहला होता है ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक एसिड.
ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड होते हैं जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, मतलब पेड़ों और जानवरों से मिलते हैं, और जिसका कंपोजिशन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं जो हमें मिनरल्स एंड रॉक्स, मतलब ये हमें लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, और ये नॉन लिविंग थिंग्स है, या ये कहें कि ये हमें मिनरल और रॉक्स से मिलते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड्स आर दोस एसिड्स which formed from which get through minerals and rocks. Now if we further divide organic and inorganic acid, organic acid, for example, if I take organic acids, first one I'll take lactic acid, formic acid, acetic acid, lactic, formic, acetic, lactic acid. Lactic acid are those which taste or which gives milk or curd in sour taste. It is formed in milk, soured milk, and in curd. Formic acid is formic acids are found in sting of ants and bees. Acetic acid is found in vinegar in general. More acids are there: lactic, acetic, formic, citric, oxalic. Citric acid, as we all know, citric acid and etc. Citric acid are those acids which are found in fruits like lemon, orange, green mangoes, etc. These are the 4 organic acids or further which are produced from plant and animals, and this is the combination of carbon, hydrogen and oxygen. In organic acid, for example, we have sulfuric acid, hydrochloric acid, nitric acid, etc. These acids are formed from minerals and rocks. और एसिड के 2 प्रकार होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों के कंपाउंड नहीं होते हैं, और ऑर्गेनिक एसिड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड कहाँ से मिलता है? प्लांट, जानवरों और पेड़ पौधों से। इनऑर्गेनिक एसिड कहाँ से मिलता है? रॉक, चट्टानों से और मिनरल, खनिज से। ऑर्गेनिक एसिड जैसे लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? जब दूध खट्टा हो जाए या दही में। फॉर्मिक एसिड पाया जाता है चींटी में, चींटी और मधुमक्खी के उसमें, डंक में। एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरके में, और सिट्रिक एसिड जो खट्टा होता है ये पाया जाता है लेमन, ऑरेंज, नींबू, संतरा और हरे आम में। इसी तरह इनऑर्गेनिक एसिड में हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड HCl, hydrochloric acid and HNO3. These are the basic inorganic and organic acid which are divided from acids in total. Thank you.